using Newton Raphson method. Using Newton-Raphson method, find the root of the equation root of the equation. Here we have an equation is f of x is equals to e power x minus 3x. E power x minus 3x. That here in this question it is some hint is given. We have to use that hint that lies between 0 and 1. सर आपकी वॉइस बहुत अटक रही है. हेलो, हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही. थोड़ा मैनेज करिए, क्या कर सकते हैं. तो हेडफोन का प्रॉब्लम हो रहा. मैं हेडफोन चेंज करता हूँ आजकल में. फिलहाल तो यू हैव टू मैनेज दैट. So the question is, we have to apply Newton-Raphson method to find the root of this equation. And here some hint is given. The root lies between 0 and 1. So you see, if it is given already in our question that the root lies between 0 and 1, we need not to search any other roots here. Already given the root lies between 0 and 1. So the root must be between 0 and 1 only. So you can see our f of तो x value. 0.5 से शुरू कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. f of x is equals to e power x minus 3x. Now if you notice, if you check it, if you start working on it by taking f of 0, we get e power 0 minus 3 into 0. 3 into 0 must be 0, but e power 0 is value is 1, that is greater than 0. Now if you see f of 1, if you see, if you take e power 1 is e only, minus 3 into 1 is 3. Now calculate this value and tell me what is the answer. e minus 3 का आंसर कितना रहा देखिए. Use the calculator for this. Too much. E minus 3 value. Minus 0.2817. 7 minus 0.2817, which is less than 0. So one value should be less than 0. Another value we are checking, that is 0.5 पे अपन check कर रहे हैं function की value. So now tell me what. If you take 0.5, what is the answer? One value should be less than 0. Another value should be greater than 0. Then you can start your process. Okay. बाद में अगर अपन 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 सब पे चेक कर लिए तो भी ग्रेटर देन 0 चाह रहा, लेस देन 0 किस पे भी नहीं आ रहा. 0.1487. 0.1487. Look at that. This value will be greater than 0. So our process will start. If one value is less than 0, another value is greater than 0, then we can say the root lies between 0.5 to 1. But we choose a nearest value. So like that, what we are doing in the previous question also we did the same thing.
we are choosing our x0 value is what? 0.5. x0 value we are choosing it as 0.5. We are assuming that the root is near to 0.5, and f of x0 we have calculated just now, f of x0, where x0 value is 0.5, and we got our answer is 0.1487. Now we have to calculate f dash of x also. From f of x, if you calculate f dash of x, you get the derivative of e power x must be e power x only, minus 3 into derivative of x is 1, so e power x minus 3 we get. This value also we have to calculate at f of x0. F dash of our x0 value is 0.5, so we have to calculate this one at 0.5. Then can you tell me that e to the power of 0.5 minus 3 is equal to what? The e power 0.5 minus 3. This don't take much of time. Minus 1.3513. Minus 1.3513. Then first approximate root. I'm using that short form, first approximate root. Can you tell me what is the formula for this one? x1 is equal to x0 X0 minus minus f of f of x0 x0 by divided by f dash of f dash x0. x0. Then put these values. x1 is equal to x0 is 0.5 we have taken, minus f of x0 value is 0.1487 divided by f dash of x0 value is, it's a negative, so that is why minus into minus becomes plus 1.3513, and just calculate this one and tell me what about our first approximate root we are getting. 0.6100. 6100. This is our first root we got. Now this one we have to put in our function again, f of x1, that is f of not f of e power. Our value is 0.6100 minus 3 into 0.6100, and then answer of this one you have to calculate that. Similarly, that same we have to put in this f dash of x1 also. This is f dash of x value. 0.0104. Yes. 0.0104. Then if you put in our function here, derivative में 0.6100 minus 3, then what's the answer again? Minus 1.1596. आपको समझ में आ रहा है ना अभी? आ रहा जी है ना? 1.1. yes जब आपको कॉलेज में करेंगे तो आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, इतना परफेक्ट बता रहा हूँ मैं, राइट? yes sir This yeah is we got it as first approximate root.
Now look at that. We have to go for second approximate root. Better we start from here only. Second approximate root. That is x2 is equal to. Oh, how the formula will change? Can you tell me? X1 minus f of x1 by f dash of x1. This is x2 is equal to x1 we got it as 0.6100 minus f of x1 value is 0.0104 divided by f dash of x1 value is minus into minus plus 1.1595. Then your answer, x2 answer. 0.6010. No, calculate one more time. Zero point 6190. हाँ अभी different आया ना? Yeah. Look at that. मैं एक चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको. This is very important. What is our x1 root? Can you tell me? 0.6100. Yes. 0.6190. So we are going in this way only. 0.6 के बाद 1 digit इधर मैच हो गया. अगर यहाँ पर आप कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है तो एक बार फिर से चेक कर लेना. We should not go far from our root. We should be near to this value only. x1 के करीब करीब ही रहना अपन. दूर चले जाने थे आप बहुत दूर. That's what I said you to calculate one more time. F of x2 is equal to e to the power of 0.6190, which is our function. We are substituting in our function minus 3 times of 0.6190 and then answer. Same thing we have to calculate in the derivative way also. Zero point 0001. देखिए ये भी एक वेरिफिकेशन है. 0.0001 मतलब अपन रूट के बहुत करीब नियर चले गए. मतलब आपका आंसर x2 x3 के अंदर ही खत्म हो जाता है. और यहाँ पर सपोज 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 40 अगर इधर आ गए तो यही फिर आपका आंसर हो जाता है x2. समझिए ना? Yes. हाँ चलिए बोलिए आंसर बोलिए. Minus 1.1429. Yes, minus 1.1429. This is correct. Third approximate root. Third approximate root. So third approximate root, how the formula will change? Can you tell me? x3 is equal to x2 minus X2 minus F of of X2 divided by. divided by F dash. अच्छा एक चीज याद रखिए आप, आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में फार्मूलाज बहुत आने वाले हैं. कल भी मैं आपको लिस्ट ऑफ फार्मूलाज Okay. दिया ना. फार्मूलाज बहुत आते रहते हैं. जी. आप x2 वैल्यू वी गॉट इट एज 0.6190 minus f of x2 value is 0.0001 divided by minus into minus plus 1.1429.
then what is your x3 becomes? Zero point 6191. हो गया, आंसर आ गया, आ गया 0.6191. Is it our answer is this only? This answer is correct now. Yes. देखिए Yes, डेसिमल sir. के बाद 3 प्लेसेस मैच हो जा रहे ना. जी. That's it. That's it. Stop our process. The root of, therefore, the root of e power x minus 3x is 0.6191. That's it. This problem will be completed. Okay. तो ऐसा रहता है आपका प्रोसेस. ठीक है ना. Okay. तो एक क्वेश्चन अपन इसका भी कर लेंगे क्या, बाइसेक्शन मेथड से भी, फिर कल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो, है ना. Okay, sir. हाँ, एक क्वेश्चन इससे भी कर लेंगे. चलो, क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द रियल रूट ऑफ रियल रूट ऑफ सेम क्वेश्चन ही चाहिए, मतलब बाइसेक्शन मेथड से भी करने का है एक तो वी राइट इट एज द क्वेश्चन इज 3x is equal to e power x है, ऐसा है क्वेश्चन में, सेम ही चाहिए. यूजिंग यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. तो क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन करो या मत करो, आफ्टर डेसिमल वी हैव टू गो फॉर मिनिमम 3 स्टेजेस. और भी मैच हो जाते कभी कभी, उतना मत करिए मत. f of x value is here. What is our f of x value is here? Same thing we take like that also, we can take e power x minus 3x, right? So we change the order also, no problem. E power x minus 3x is equal to 0. Then we start working, that is by assuming that we can always start with f of 0 here. F of 0, that is e power 0 minus 3 into 0, which is equal to e power 0 is 1. So answer is positive. Now f of 1 we take. Always we are assuming that the root lies between 0 and 1 only. ठीक है ना. E power Yes. 1 minus 3 into 1, that is e minus 3. उसका आंसर आपको आया था ना अभी, कितना आया जरा बोलिए. Minus 0.2817. माइनस 0.2817. आर यू श्योर? ग्रेटर देन 0. एक बार चेक कर लेंगे क्या. e माइनस 3 का आंसर, यस. चलिए सही, मैं ये क्वेश्चन करा नहीं, बस आपके साथ कर रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए. तो वन वैल्यू इज लेस देन 0, अनदर वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब अपन रूट के और थोड़ा करीब जाएंगे, 0.5 तक जाएंगे. दिस इज ई पावर 0.5 minus 3 into 0.5. So what's the answer? 0.1487. आप भी करें ना, मैं नहीं कर रहा हूँ. देखो 0 पॉइंट आपको आ रहा बोल के मैं आपके आंसर वेरीफाई कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा. 0 पॉइंट बोलिए. 1487. 1487. तो दैट इज ग्रेटर देन 0. तो सॉरी, यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी. पहली वैल्यू जो थी ना वो लेस देन 0 है. देखिए छोटे से मिस्टेक भी नहीं होना है, ये लेस देन 0 है ना. f of 0.5, this is equal to e power 0.5 minus 3 times of 0.5. What I said, what do you said the answer?
0.1487. So that is positive, greater than 0. So what do you say? Choosing A is equal to हाँ बोलिए 0.5. very good and b is equal to 1 है ना एक लेस देन 0 एक ग्रेटर देन 0 है राइट Yeah. तो the first approximate root ऐसा लिखेंगे for therefore the root lies between the root lies between 0.5 and 1. The first approximate value x1 is equal to A 0.5. plus B divided by 2. Yes, a plus b divided by 2. That is what's the answer? फंक्शन में रखेंगे पॉजिटिव आया तो b को रिप्लेस करता नेगेटिव आया तो a को रिप्लेस 0.5 ग्रेटर देन 0 है ना हाँ ग्रेटर देन 0 a को रिप्लेस करता लेस देन 0 b को 0.7500. 0.75 00 is not necessary. This one we have to put in our function that is equal to e power 0.75 minus 3 times of 0.75. Then can you tell me the answer? ठीक है लेस देन 0 आया तो b को रिप्लेस करेगा ग्रेटर देन 0 आया तो a को रिप्लेस करेगा Minus 0.1330. यस कितना आ रहा कैन यू टेल मी Minus 0.1330. 1330 मतलब 3 लेस देन 0 मतलब ये 1 को रिप्लेस करेगा लेस देन 0 जो आया था ना 1 पे तो 1 को रिप्लेस करेगा ये ऐसे रहेगा तो द रूट देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन अच्छे से देख लीजिए आप लाइज बिटवीन बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 है लेस देन 0 मतलब 1 को रिप्लेस करेगा 0.5 एंड 0.75 ठीक है सो देन x2 Yes. सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट इज 0.5 plus 0.75 divided by 2 that's answer tell me the answer now फिर फंक्शन में रखेंगे लेस देन ग्रेटर देन के ऊपर डिपेंड करता दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल आफ्टर डेसिमल 3 stages should match 0.6250. 6250 that we have to put in our function 0.6250 that is equals to e to the power of 0.6250 minus 3 into 0.6250 and then answer Minus 0.0068. 0.0068 मतलब लेस देन 0 आए लेस देन 0 आए ठीक है लेस देन मतलब 0.5 तो एज इट इज रहेगा therefore the root lies between 0.5 and 0.6250 then after x2 we have to move on for x3 that is the a plus b by 2 is the formula a plus b 0.6250 that is divided by 2 and then answer
0.5625. ये एक चीज और आपको बताना जरूरी है, यहाँ पर x2 x3 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतनी दूर चले गया मैं पीछे चले गया बोलते, ऐसा मत करिए। ये बाइसेक्शन मेथड में ना कम से कम 7-8 स्टेजेस तक तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जल्दी आंसर इसमें आता नहीं कभी। बाइसेक्शन मेथड में पेशेंस बहुत ज्यादा रहना है। 5625 मिनिमम 7-8 स्टेजेस, कभी 10-12 स्टेजेस तक भी चले आते। 0.5625 माइनस 3 टाइम्स 0.5625, दैट इज आंसर। 0.6, no, 0.0676. 0.676 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 पे रिप्लेस होता। द रूट लाइज बिटवीन बिटवीन सेकंड वाला टर्म जो है यहाँ पर वही रहेगा, फर्स्ट वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा। 0.5625 एंड 0.6250 are this. Then x4 we have to go. This is 0.5625 plus 0.6250 divided by 2, and then answer. 0.5938. 5938, so 0.5938, 0.5938, 0.5938, and then tell me the answer. 0.0295. 0295, it is positive, greater than 0। ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट वैल्यू रिप्लेस होती, सेकंड एज इट इज रखेगी। द रूट लाइज बिटवीन द रूट लाइज बिटवीन 0.5938 and 0.6250, then x5 0.5938 plus 0.6250 divided by 2, then answer. 0.6094. 0.6 great answer is 0.94, or 0.6094, 0.94, and then just calculate and tell me. .
0.01111. बोलो आंसर आवाज लाउडली. 0.0111. आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए. 0.01111. हाँ. 0 0.01111. Yeah. Okay, so that is positive, greater than 0. मतलब second value replace. Greater than the first value replace. So first value is 0.6094 and 0.6250 as it is. The next 6, 0.6094 plus 0.6250 divided by 2. And what is the answer? 0.6172. This one we have to put 6172 e power 0.6172 minus 3 into 0.6172. Then calculate and tell me. 0.0021. Positive. Yes. Root lies between positive now, so 0.6172 and 0.6250. The next 7. 617. इस तरीके के कपड़े हम तोल वहां पर. हम तोल. Just calculate and just tell me. Move from that side. Tell me the answer x7. Yes, sir. 0.6211. Again put it this in our function. 0.6211 minus 3 times of 6211. Then what's the answer? Minus 0.0023. 2. It means less than 0. लेस देन 0 बोलते फर्स्ट वैल्यू तो as it is रहेगी, सेकंड रिप्लेस हो जाएगा. यानी कि 0.6172 तो as it is रहेगी और दूसरी रिप्लेस 6172. yes. The root lies between 0.6211 and second will replace. Second one is 0.6250. Yes, next is what we have to calculate. x8. x8 calculate करें. 0.6211 plus
0.6250 divided by 2. Calculate and tell me. 0.6231. गेन फंक्शन में रखूंगा. This is equal to e power 0.6231 minus 3 times 0.623 and then answer. Minus 0.0046. लेस देन 0 है. लेस देन 0 मतलब सेकंड वाले रिप्लेस हो रही है. लेस देन 0 मतलब सेकंड वाले. The root lies between 0. फर्स्ट वाले रिप्लेस हो रही है 0.231 and 0.6250. x9 बोली. करिए आप कैलकुलेट. प्लस बोलिए कैलकुलेशन आंसर. 0.6241. तो फंक्शन में रखना पड़ता. टाइम भी बहुत कम है. ई फॉर 0 पॉइंट करते जाओ. साथ में Yes, ही sir. करते जाओ. बोलो आंसर. Minus 0.0057. लेस देन 0 है. तो फर्स्ट वैल्यू रिप्लेस करो. सेकंड वैल्यू एज इट इज रखें. एक्सटेंड कर लेंगे अपन एक बार. नहीं तो फिर आपको कर लेना पड़ता है. ये कैलकुलेट करके देख लो एक बार. जल्दी से कैलकुलेट करो. ठीक.